Okay, so this is the second type of graph that we call it as a subdivided bar graph. What is the reason why we call it as subdivided? Okay, let's assume it. If you talk about this one, so actually this is one single bar. Okay, and according to the information, we divided this one bar in a two parts. Suppose this is one part, this is second part. First part, or this is the second part. Now here is also we are observing data, number of boys and number of girls, which is present in that particular month, April, May, जून एंड जुलाई. क्लियर है. सो ये आपका बेसिक आइडिया है कि हम अभी ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितने बॉयज कितने गर्ल्स अप्रैल में कितने प्रेजेंट थे, मई में कितने प्रेजेंट थे, जून में और जुलाई में. ठीक है. सो फॉर दैट लेट्स ऑब्जर्व द डेटा. ओके, व्हाट इज द डेटा? So let's assume it. Number of boys in April month 50 students. Similarly 50 girls are there. May in a May 36 boys, 43 girls. In a June 63 boys, 100 girls present in that particular June month. Similarly, in the same class of 143 students, or in that particular event 143 boys are present and 148 गर्ल्स आर प्रेजेंट. अब मान के चलो कोई भी इवेंट है, उस इवेंट में यहाँ पे बच्चों का जो अटेंडेंस है वो हमने मार्क किया है, कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है. तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा है वो डेटा हम बना रहे हैं. क्लियर है. लेट मी चेक माइक का ऑपरेशन चल रहा है क्या. ओके गुड. सो ये जो डेटा है वो अभी हमें डिस्कस करना है. क्लियर है. अब तो पहले मंथ का हमने डेटा देख लिया था, 50-50 था और फर्स्ट इवेंट में. So always green color, this is number of boys, and red color, which is number of girls. So let's see, the 50 boys are there and 50 girls are there. So togetherly it is 100. क्लियर है. तो इसमें एक शॉर्टकट भी हम बना सकते हैं. थर्ड में टोटल लिख सकते हैं, तो टोटल लिखेंगे तो आसान हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द सेकंड डेटा फॉर द सेकंड, इन मे मंथ जो हमने इवेंट कंडक्ट किया था उसमें बॉयज कितने हैं, 36 बॉयज, 43 गर्ल्स. सो लेट्स सी हियर, 43 बॉयज, ओके, एंड remaining girls are there. So similarly for the next event, what is the data? 6300. So here is a 63 and total is next one is 100. Number of boys 63 and 100, so totally 163. So likewise we have to plot a graph. Up, this is a given data, so we are not changing the data. In the next session, or we will write our data. So 143 and 48. So 143 is the number of boys. So 143 is here, and remaining boys are there. Clear? है? So for our understanding, just we will write a simple data, and then we will come back to the graph. Suppose just we will edit the data. Out of 200 we will write a data. Suppose here 1 150 boys are there, 50 girls are there. Similarly I will write here 100 plus 50. Uh, according to that I will write it a 50 boys and 150 girls. थोड़ा मैं यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ, अपोजिट 50 और फिर से 50 कर देता हूँ. तो ये डेटा है. नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व द फॉर अप्रैल मंथ, May, June and July. Number of boys, oh, sorry,
try this. Copy and we will paste it here. Okay. So look into that. This is the data. So for first graph, 50 and 100, this is the number of boys and number of girls. So let's see, 150 boys are there, and okay, so this is the data of April month. So 150 boys, so 100 and here is 150. So 150 boys are there, and remaining 50 girls are there. Similarly, just move to the second data, 100, 150. Okay, this is the data which is collected in May month. So for that same event, so there are 100 students. Okay, they were present in that session. So 100 बच्चे present थे और वो boys थे. बचे हुए जो girls है वो कितनी थी? 50 थी. So total कितना हो गया? 150. For the third case, so only 50 students were present in that particular session or particular program, and remaining 150 girls present for the session or the program which is conducted in a June month. So total number of students 200, here 150, and here is 200. Now let's move to the last session or July month. So 50 number of boys and 50 number of girls were present in that case. So likewise we have to draw a subdivided bar graph. So separately we have to write it write down the number of boys present in that particular event, number of girls which is present in that particular event for that particular month. क्लियर है? तो हमें ऐसे जो डेटा है वो कंप्लीट करना है. नेक्स्ट वन, अगर मान के चलो सब डिवाइडेड बार ग्राफ के बारे में अगर दूसरा कोई एग्जांपल लेना है तो हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं. जस्ट एक एग्जांपल, एडिट डेटा. अब मान के चलो हम बहुत सारे बच्चे हैं कि जो इंटरेस्टिंग सेशन था, फिर इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, तो उन लोगों की प्रेजेंट है मान के चलो बढ़ गई. तो फिर से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 150 अब 200 बच्चे प्रेजेंट है. अब यहाँ पे भी 250 बच्चों ने प्रेजेंट ही लगाई है और यहाँ पे 300 बच्चे प्रेजेंट है. तो इस केस में क्या डेटा आएगा देख लेते हैं. ऑटोमेटिकली हमारा ग्राफ का जो स्केल है वो भी 400 तक चला गया. ठीक है, पहले 200 था, अब 400. ये सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है तो ये ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाते हैं. बट हमें ये जो डेटा है, ये जो भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है, ये सब हमें एग्जाम में मैनुअली करना पड़ेगा. मीन्स ये जो स्केल है ऑन अ वाई एक्सिस वाला, जो भी एक्स एक्सिस में हम जो कंटेंट है या फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे या फिर विलेजेस होंगे, या फिर अभी यहाँ पे हमने अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, तो ये जो डेटा लिया हुआ है वो हमें मैनुअली फिल करना पड़ेगा ग्राफ पेपर पे. अब मान के चलो फॉर अप्रैल मंथ डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, 150 बॉयज, ओके, एंड 150 गर्ल्स. अब दोनों भी मिला के 300 हो रहा है. नेक्स्ट वन, मई मंथ का डेटा देख लो, 100 बॉयज एंड 200 गर्ल्स, टुगेदरली 300. सेकंड वन, 250 boys, they attended the session in a June month. Similarly, less girls means around 150 girls. So 150 plus 250 कितना हो जाएगा, 300, 400. So result is 400. लास्ट में क्या है, in a July month, so very few students means only 50 boys they joined the session, and remaining all the girls around 300 girls they joined the session. So togetherly कितना हो जाएगा, 350. So your scale is here in between 300 to 400. This is a 350. तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, सब डिवाइडेड बार ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है, सब डिवाइडेड का मतलब होता है कि एक ही ग्राफ में हम दो डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके,
सो दिस इज ऑल अबाउट सब डिवाइडेड बार ग्राफ। आई होप कि अच्छा लगा होगा ये सेशन आपको। और नेक्स्ट में जो हम परसेंट बार ग्राफ के बारे में बात करेंगे एंड पाई चार्ट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।